चलिए देखेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव ज़रूर है, लेकिन दो अच्छी चीज़ें जो हुई है और वो जिसे मार्केट नज़रअंदाज नहीं कर सकता, कल रिटेल इन्फ्लेशन और आज होलसेल, इन दोनों में अब देखिए जिस तरह से अब ट्रेंड है ना, ये आई थिंक एक अच्छा, अभी ठीक है मार्केट का थोड़ा सेंटिमेंट शायद आज इन्फोसिस और उसके चलते थोड़ा क्लाउडी रहे, पर ये अच्छी चीज़ है अपने आप। उसी ने अगर आप देखें मिहिर आज डाउन साइड कैप किया हुआ है आई थिंक, वरना कल का डेटा इतना कमज़ोर था कि पूछे मत। उसको देख लग रहा था कि आप 85-50 को रीगेन करेंगे, बट स्टिल आप देखिए कि शायना आप क्या कहेंगे, आई मीन अब निफ्टी बैंक पर या फिर बैंकिंग स्टॉक्स पे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे PSU बैंक्स पे, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में शॉर्ट जाना बनता है क्या? आई मीन शॉर्ट के बारे में स्पेशल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे माहौल शॉर्ट का है। आपने 50 डेमा को तोड़ा, यू आर अप्रोचिंग 100 डेमा, या फिर आपको लगता है कि नहीं, जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं CPI, रिटेल इन्फ्लेशन, वो जिस ट्रेजेक्ट्री में है अब एक सब्सटेंशियल रेट कट इंतजार कर रहा है, ऐसे में शॉर्ट जाना रिस्की होगा काफ़ी? देखिए वैसे मैं ज़्यादा शॉर्ट नहीं प्ले करती हूँ अनलेस ओवरऑल मार्केट अगर एकदम जैसे अभी इफ़ इट ब्रेक्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स, तो अभी हम मेंटेन कर रहे हैं, तो एज ऑफ नाउ आई एम नॉट रियली शॉर्टिंग एनीथिंग, बट आई एम मोर ऑफ अ बायर ऑन डिप्स एज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, बट यहाँ पर मुझे बाइंग की भी नज़र नहीं आ रही है, सो आई थिंक आई एम जस्ट स्टेइंग अवे फ्रॉम द मार्केट एज ऑफ नाउ। राकेश, आप कोई पिक रेकमेंड करेंगे? और देखिए मिहिर डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे, और मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में काफ़ी कल स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। निफ्टी की अगर आप बात करते हैं तो 8700 ऊपर में एक रेजिस्टेंस है और निफ्टी अटेम्प्ट करेगा 8500 के सपोर्ट को तोड़ने के लिए। अब आप देखना ये है कि नीचे में 8470 से लेकर 8500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर ये टूटता है तब अनदर 100 to 150 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 8500 के स्तर हमें अगले सप्ताह डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी में भी आप देखें तो 19,500 से लेकर 19,600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मिहिर अगर आप ध्यान दें, नीचे से एक नॉन स्टॉप रैली देखिए और पहली बार चार्ट्स पे एक रिवर्सल बना है, डेफिनेटली शॉर्ट्स बनते हैं, और बैंक निफ्टी भी नीचे में 18,400 से लेकर 18,500 के स्तरों तक गिरने का पोटेंशियल रखता है। इंडिविजुअल शॉर्टिंग करनी है तो येस बैंक एक बेहतरीन पिक लगता है। येस बैंक का फ्यूचर बेचें 1301.50 के स्टॉप लॉस के साथ, 1180 से 1190 के लक्ष्य के लिए। BHEL का फ्यूचर बेचने की राय रहेगी, बट पुल बैक पे बेचें। BHEL का फ्यूचर 137 138 के अराउंड बेचें, 141 का स्टॉप लॉस, 118 से 122 का लक्ष्य है। विप्रो के फ्यूचर को बेचें 488.70 के स्टॉप लॉस के साथ, 456 से 460 के टारगेट के लिए। अगर कहीं लॉन्ग जाना है तो मेरा ऐसा मानना है ऑयल एंड गैस स्पेस में गेल, ONGC, ऑयल इंडिया को देखना चाहिए, जहां पर क्लियरली एक तेजी का रुझान है और जो गिरते बाजार में 3 स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ONGC को बाय करें 263.50 के स्टॉप लॉस के साथ, 292 के लक्ष्य के लिए। ऑयल इंडिया को बाय करें 406.90 के स्टॉप लॉस के साथ, 432 के टारगेट के लिए। बिल्कुल। चलिए, इस बीच इन्फोसिस और TCS पर हमने काफ़ी बात की, अब इनके नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ NASSCOM के प्रेसिडेंट मिस्टर आर चंद्रशेखर मौजूद हैं। सर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल, you must have heard the commentary from both the managements, the poster boys of Indian IT story at this point, going by their numbers and going by their guidance, I would say. What is your outlook for the IT companies? See, we have been seeing that number of factors which are short-term in nature have been adversely impacting the growth story in the Indian IT industry. Most of these, as we have pointed out, are short-term in nature, and like whether it is Brexit, whether it is softness in the BFSI sector in the US, or in terms of some currency fluctuations, etc. So what we have seen now is continuation of these short-term factors. The good news, in a sense, is that most of the short-term issues, I think we are now actually going to see them bottoming out, because the Brexit decision was known. The fluctuation in the value of the pound, I think whatever impact it was to have, has already happened. The US elections are due in a short while, so that uncertainty also will go, and all of the associated uncertainties will therefore reduce. After that, I think we will be then, whatever impact we will be seeing are the longer term issues and longer term dimensions.
And as we have been saying in the past, while in the short term the impact has been negative, we don't see any major issues or big problems in terms of the medium term and long term prospects. People have to adopt technology. People have to adopt the digital See, technology. Mr. Chandrasekhar, Yeah. that is fine. The question, which is currently being discussed, at least from the market perspective, stock market perspective, is that is the worst over for IT companies in terms of global environment, macro environment, Brexit impact, because then we are also looking at US presidential elections. So if we were to talk about the macro environment at this point for the IT industry, so can we say that the worst is over now? I would not say the worst is over. I would say that we are probably now coming out of the bottom of that trough. We may still be in the trough for a little while, but we will probably see that maybe continuing to have some impact over 1 or 2 more quarters. But thereafter, I think the short-term factors which have been causing all these changes, those I think would have settled down, and then we can look at both opportunities as well as challenges, which are more long-term, secular and sustained in nature. Okay, sir, exactly. आप ये देखिए TCS ने जो स्टेटमेंट दिया था कि they are slightly worried about BFSI. मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि since US economy is doing well, we are talking about rate hike in US. Exactly जो चीजें हैं वो फिर पटरी पे कब तक आ जाएंगी इन IT कंपनियों के लिए? पोस्ट इलेक्शंस, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, चीजें क्या 2 से 3 महीने में फिर से ठीक होने लगेंगी US में इन IT कंपनियों के लिए? देखिए, US में एक बार इलेक्शन हो जाने के बाद तो फिर रिजल्ट तो नतीजा तो नवंबर में ही पता चल जाएगा, अंतिम दौर तक आ जाएगा। जी हाँ, और एक्चुअल ट्रांजिशन ऑफ कोर्स जनवरी में होगा, पर फिर भी मार्केट का जो एक्सपेक्टेशंस है वो तो they will already get factored in, because depending on who has won the presidential election, they will make their own assumptions. So some of the uncertainties in the BFSI sector in the US are also believed to be caused by the decisions of the of the Federal Bank, the Central Reserve, and in turn those are believed to be also influenced by the US elections and attendant uncertainties. So all of those things will then settle down, and we know that economy-wise, fundamentally there is not much of a problem in the US. We know that spending on technology is inevitable, and that company spending is continuing. We also know that there is no change in terms of the trend of business coming into India. So NASSCOM, we do not comment on an individual company, but when we look at the picture, NASSCOM में हम सिर्फ इंडियन कंपनीज का नहीं देखते, इंडियन कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स, बिग कंपनीज, स्मॉल कंपनीज, सर्विस कंपनीज, बीपीएम कंपनीज, सब इकट्ठे करके उसका टोटल इम्पैक्ट क्या होगा वो हम देखते हैं। और अगर उस नजर से देखा जाए तो द पिक्चर इज perhaps far more stable than you might imagine. सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस मुद्दे पे बात की आपने आज बड़े नतीजों पर और IT सेक्टर पे। बहुत बहुत शुक्रिया।